Good morning, students. Today we are going to start a new topic named fertilization in plants. And in the last lecture, we had studied about pollination and different agencies, and how a male gamete pollinates, or how male gamete gets interacted with a female gamete. So in this topic we would discuss about fertilization. And what is the meaning of fertilization? Is a fusion of male gamete with female gamete, that is egg, to form a zygote. तो जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. एंड दिस fertilization process was discovered by a scientist named Strasburger. So let's start. Actually, we would discuss the whole process of fertilization in plants in steps. So what would happen in the first step? The first step, what happens? There is interaction between pollen and pistil. Pollen pistil interaction. जब भी pollen grain किसी भी एजेंसी के थ्रू विंड, वाटर, इंसेक्ट, whatever, जिस भी एजेंसी के थ्रू वो पहुंचेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, तो जैसे ही वो पहुंचेगा, एज यू नो दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज लाइक स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो जैसे ही वो पोलन ग्रेन पहुंचेगा वो कहाँ जाएगा? स्टिग्मा पार्ट के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे क्या होगा? दैट इफ दैट पोलन इज जेनेटिकली सिमिलर, if that pollen belongs to the same species of plant, then that pollen will be accepted for germination. So यहाँ पे in the first step, what would happen is pollen pistil interaction. Here you can see the stigma part of a female reproductive system, and here you can see a pollen which is usually two-celled stage. आप लोगों ने in the previous lecture you have studied about this two-celled stage, vegetative or tube cell and generative cell. So normally the pollen is in two-celled stage. When gets interacted with the stigma part of female reproductive system, the female reproductive system actually starts recognizing the pollen grain, whether this pollen grain belongs to the same species or genetically similar. So when this stigma confirms that that pollen belongs to the same genetical category or from the same species, what would happen in the next step? In step 2, secretion from stigma. Stigma, after the identification or after the compatibility, after the confirmation of compatibility between pollen and stigma, that stigma part starts secreting a kind of secretion having water and sugar in it. So ये stigma excretion जो है वो रिलीज करना शुरू करती है. उस secretion में क्या है? Water and sugar. And that secretion is absorbed by pollen through a germ pore. जो ये secretion stigma करेगा, उस secretion को जो pollen grain है वो उसको secrete करेगा. अब आपको पता है, आप लोगों ने pollen grain का structure पढ़ रखा है हमारे previous lecture में. अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार फिर उस lecture को देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने एक एंथर के structure को हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो वहां पे आप लोगों ने देखा था कि एक्साइन लेयर आप लोगों ने देखी थी, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन. एक्साइन लेयर आपने देखी थी विच इज नोन एज हाईली रेजिस्टेंट. तो उन एक्साइन लेयर्स में गैप्स थे. उन गैप्स को हम लोगों ने क्या कहा था? जर्म पोर. तो उन्हीं जर्म पोर से पोलन ट्यूब भी इमर्ज होती है, और उन्हीं गैप से, उन्हीं जर्म पोर से इन secretions को भी अंदर लिया जाएगा पोलन्स के द्वारा. सो secretions in the form of water and sugar absorbed by pollen through
जर्मपोर इन गैप्स के थ्रू। तो जैसे ही ये सिक्रीशंस अंदर जाएंगे, उसके बाद दैट पोलन स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर absorbing the secretions released by stigma, that pollen starts forming pollen tube. Okay, so what happens in the third step? Germination of pollen grain means यहाँ पे pollen tube बनना वहां पे शुरू हो जाएगी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, this is a pollen structure, exine part, exine which is highly resistant, made of sporopollenin, and in between these exine these are gaps known as germ pore, और इन्हीं germ pore के थ्रू इन secretions को absorb भी किया गया था, और इन्हीं germ pores के थ्रू क्या होगा, वेजिटेटिव जो सेल है वो मॉडिफाई होता है पोलन ट्यूब्स में, तो पोलन ट्यूब भी इन्हीं germ pore के थ्रू ही इमर्ज होगी। तो यहां देख सकते हैं दिस पोलन एक्साइन, एंड as I said that this is two-celled stage, so the bigger cell is known as vegetative or tube cell, and smaller spindle-like cell is known as generative cell. तो यहाँ से pollen tube बनेगी, and this pollen tube starts penetrating inside the stigma, part of female reproductive system. So before getting penetrated into stigma part, what happens just before that? This generative cell undergoes one mitotic division. Do remember, this generative cell, before getting penetrated into stigma part, this generative cell undergoes one mitotic division. और जैसे ये one mitotic division के अंदर जाएगा, जहां यहां आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक मेल गैमेट था, इस एक मेल गैमेट से दो मेल गैमेट्स बन जाएंगे। तो इस जनरेटिव सेल में जो एक मेल गैमेट था, एक से दो कैसे बने? इस वजह से क्योंकि वहां पे माइटोटिक डिवीजन वहां पे हुई जस्ट बिफोर पेनिट्रेशन। ओके, और यहां आप लोग ये भी देखिएगा, इफ ओनली वन ट्यूब इमर्जेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसिफनस। ये टर्म इसको आप याद कीजिएगा, अगर एक ही ट्यूब इमर्ज होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, मोनोसिफनस। अगर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब्स इमर्ज हो, उन्हें हम क्या बोल देंगे, सिंपली पॉलीसिफनस। ओके, सो थर्ड स्टेप, germination of pollen grain and germination of pollen tube takes place, and mitotic division in generative cell to form two male gametes. Okay, so what happens in the fourth step, growth of pollen tube? अब वो पेनिट्रेट करना वो शुरू कर देगी। जनरेटिव सेल्स में माइटोटिक डिवीजन हो चुकी है, वहां दो मेल गैमेट्स बन चुके हैं। अब पोलन ट्यूब का बनना, अब पोलन ट्यूब का जो है ग्रोथ करना इनसाइड दैट स्टाइल रीजन वो शुरू हो जाएगा। तो जब स्टाइल की बात आती है, दिस इज स्टिग्मा पार्ट, अपर सरफेस, दिस इज स्टाइल पार्ट। तो ये स्टाइल दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये होलो होंगे अंदर से, या तो ये सॉलिड होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, इन केस ऑफ होलो, ओनली एपिडर्मल लेयर्स आर प्रेजेंट, एक ही लेयर प्रेजेंट होगी और अंदर कोई भी सेल यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। दिस इज होलो टाइप ऑफ स्टाइल। In case of solid type, again epidermal, outer epidermal layer, and inside this is not as empty as in this case. In this case, parenchymatous cells are present. यहाँ सभी आपको parenchymatous cells मिलेंगे, and they also known as conductive tissues, क्योंकि ये conduct करते हैं pollen tube की growth को, उसकी elongation को। Okay, so conductive tissues allows the movement or the growth of pollen tube towards embryo sac. तो यहाँ आपको parenchymatous cell मिलेंगे like in solid style. Okay, like that. Here you can see, say for example, this is a solid type of style, and here you can see a pollen
and and from this pollen tube has emerged out and have started penetrating inside its style along with these two male gametes. अब ये दो मेल gametes यहाँ पे साथ साथ में आना शुरू हो गए हैं. यहाँ एक बात आती है, जैसे हमने ये चीज जहाँ पे डिस्कस की है, ये देखिए दिस इज अ पोलन ट्यूब. इस पोलन ट्यूब में यहाँ देखिए दीज आर टू मेल gametes और जस्ट इन टू मेल gametes के ऊपर यहाँ पे क्या बनाया मैंने, लाइक अ बैंड. दिस बैंड इज नोन एज कैलोस प्लग, CALLOSE, कैलोस प्लग. This callose plug is formed inside that pollen tube just to avoid backflow of male gametes. यानी मेल gametes का backflow ना हो, उसको avoid करने के लिए callose plug form होता है उस pollen tube के अंदर. Okay, so just to prevent backflow of pollen tube, these callose plugs are being formed inside the pollen tube. Here you can see this is a large structure, a big structure of diagram of female reproductive part. This is stigma region, style region, and this is ovary region. Inside the ovary you can see here this is ovule and this is placenta from where it is connected. This is chalazial end, this is micropyle end, and these are integuments. It is bitegamic. Bitegamic means two integuments, especially in case of angiosperms. In case of gymnosperms, only one tegument is present, so known as unitegamic. Unitegamic आपको मिलेंगे in gymnosperms, bitegamic मिलेंगे in case of angiosperms. तो यहाँ आप देखिए this pollen tubes, देखिए इसकी ग्रोथ हो रही है, साथ साथ में ये कैलोस प्लग्स बनते गए ताकि इन दोनों मेल gametes के बैकफ्लो को अवॉइड किया जा सके. अब ये पोलन ट्यूब कहां पहुंच रही है, नियर माइक्रोपाइल एंड. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 में 100 केसेस में या सभी प्लांट्स में जो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी वो माइक्रोपाइल एंड के पास से ही होगी, ऐसा भी नहीं है. कुछ एक एक्सेप्शंस है. इफ पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चैलेजल एंड, अगर ये पोलन ट्यूब यहां से एंटर होती है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज चैलेजोगेमी इन सम प्लांट्स. ओके, द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चैलेजा नोन एज चैलेजोगेमी. इफ पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट्स, अगर वो यहीं से एंटर हो जाएगी इंटेगुमेंट्स के थ्रू, देन नोन एज मेसोगेमी, उस प्रोसेस को बोलते हैं. एंड इफ पोलन ट्यूब एंटर्स वाया दिस माइक्रोपाइल एंड, then known as porogamy, porogamy. And normally majority of plants में क्या होता है, through porogamy, यानी माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ही जो पोलन ट्यूब है वो एंटर होती है और टू मेल gametes को वो रिलीज करती है. तो यहाँ आप लोग, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है थ्रू माइक्रोपाइल एंड, जस्ट आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में ऐसे ही आपको मिलेगा. अगर इन केस ऑफ चैलेजल यहां से एंटर होगी देन चैलेजोगेमी, अगर थ्रू इंटेगुमेंट्स एंटर होगी देन इज मेसोगेमी. ओके, सो द स्टेप 5. अब यहां पे आप लोगों ने देख लिया, यहां पे पोलन ट्यूब अंदर एंटर हो चुकी है थ्रू माइक्रोपाइल एंड यहां पहुंच चुकी है. अब यहां पे क्या होगा देखिए, इन स्टेप 5 एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी अब ये जो एम्ब्रियो सैक अंदर है यहां पे इस पोलन ट्यूब की एंट्री होनी है. So entry of pollen tube into embryo sac. Here you can see the structure of embryo sac. This is chalazial end, this is micropyle end. And as I have told you earlier that towards chalazial ends there are antipodal cells and towards micropyle end there are eggs, one egg and two synergids. And in the middle one, in the middle part of this embryo sac, टू पोलर न्यूक्लियाई. सो यहां आप ध्यान से सुनिएगा, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड, एज आई टोल्ड यू दैट वन बिग egg cell and two synergids are present. There are some finger like structures which start originating
from these two synergids known as filiform apparatus. यानी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें कि हम लोग फिलीफॉर्म प्रोजेक्शंस फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं, वो कहां से ओरिजिनेट होंगे? थ्रू दीज synergids, and these filiform apparatus actually function as a guide for pollen tube. वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि आओ और एंटर करो उस एग सेल के पास, यानी उस एम्ब्रियो सेल के अंदर एंटर करने के लिए जो एज ए गाइड काम करेगा वो कौन करेगा? फिलीफॉर्म apparatus. दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. वो कहां बनेंगी? सिनर्जिड्स के बॉटम पे. ओके, सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस known as filiform apparatus origin from synergids and function as a guide to pollen tube to enter inside the embryo sac. So here you can see this pollen tube along with these two male gametes is now entering inside this embryo sac through the help of filiform apparatus. Through the help of filiform apparatus. And then when pollen tube reaches there through the help of filiform apparatus, it gets ruptured and released two male gametes inside the embryo sac. So when here we can draw in the next step, we have lack of space on board, so in the next step what happens in step 6, as I told you that when a pollen tube enters inside embryo sac, it gets ruptured and released two pollen grain inside the embryo sac. So what happens inside the embryo sac? Inside embryo sac, what happens? There are two pollen grains. So one male gamete, we have two male gametes, one male gamete fuse with egg cell to form zygote. Okay, so one male gamete get fused with egg to form a zygote. Both are haploid and zygote is diploid. Second male gamete gets fused with two polar nuclei to form PEN, means primary endosperm nucleus, and it is triploid. Why triploid? Because here you can see here are two nucleus are there over there. One is there, one N and two N. It's three N. It's triploid. It is triploid. And further, this primary endosperm nucleus form endosperm. And this endosperm is nutritive in nature and gives nutritions to the growing embryo. क्योंकि ये जाइगोट है, जाइगोट will become an embryo later on. So जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उसको न्यूट्रिशंस चाहिए, तो वो न्यूट्रिशंस कौन प्रोवाइड करेगा? ये एंडोस्पर्म. So
here you can see these two male gametes are getting fused with egg and two polar nuclei. यानी यहाँ पे दो जगह पे फ्यूजन हो रही है, एक फ्यूजन यहाँ पे हो रही है, जाइगोट बना, और एक फ्यूजन हो रही है यहाँ पे, क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे दो जगह फ्यूजन हो रही है, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, just because of that reason is known as double fertilization, known as double fertilization. So double fertilization क्या है, because we have two male gametes, one male gamete gets fused with egg cell to form a zygote, and second male gamete gets fused with two polar nuclei to form primary endosperm nucleus. So here we are witnessing two fusions inside that embryo sac. So that's why it is known as double fertilization, double fusion or syngamy. Okay, so here you can see the stepwise development of the process fertilization, and it is very typical in case of angiosperms when it comes to double fertilization. So thank you very much, and do revise properly, and we would come up with a next topic tomorrow. Thank you.